Good morning, guys. Welcome to the live trading and learning session. Today I'm going to teach you how I trade in the market, live market, and how I plan my trades. Today I'm going to teach you how to trade Nifty. This is Nifty's chart in front of you. For all my intraday trading, I use a 2 minute chart. So you can see here is a 2 minutes selected now. If you go by the daily chart of Nifty, it opened beyond the previous day's range. So this is the previous day's high, and it opened here and started moving up. So this was the first trigger to make a buy, but I would not buy at the first candle because this can come down and we cannot just take a trade on the first candle itself. So where we plan to trade is after open. Yeah, after open, when it consolidated here and finally started moving up, I planned a trade here. अब आप कहेंगे यहाँ पे ही क्यों लिया, क्योंकि दिस इज एज पर आर सिस्टम, एज पर आर सेटअप, प्राइस एक्शन सेटअप. So how I planned it is this is my entry level, this is my stop loss. So around 30 points is the stop loss, and 1 is to 2 would be the 60 points. So 60 point is coming around somewhere here. Yeah, 1 is to 2 you can see here. अब क्या हुआ, निफ्टी बाय फार हैज़ मूव्ड 1:2. अभी तक निफ्टी 1:1 चल चुकी है, 1:2 बाकी है. कल के भी लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि अ गुड स्ट्रैटेजी इज़ कि आप 1:1 बुक करके स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लीजिए रिमेनिंग 50% क्वांटिटी में कॉस्ट पे, और उसके बाद ओपन रहिए 1:2 या 1:3 के लिए. सो सेम थिंग वी डिड इन दिस. और मैंने यहाँ पे जब 1:1 मिला तो आई एग्जिटेड हाफ, क्योंकि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और यहाँ से 30 पॉइंट्स वॉज 520. सो यहीं पे हमको 1:1 मिला. वी बुकड हाफ ईयर in this range, like here we booked a half, and then we moved our stop loss to this entry level in the रिमेनिंग 50% क्वांटिटी. तो अब हमने बची हुई क्वांटिटी में अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल किया है. पहले हम स्टॉप लॉस लगाते, जब हम दोबारा उसमें जाते तो वो हम कहते उसको ट्रेल स्टॉप लॉस, मॉडिफाइड स्टॉप लॉस. तो वो हमने यहाँ पे ट्रेल किया है. और अब हम 50% जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 5 हमने बुक कर लिया, 5 में हमने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया. तो अब हमारा वर्चुअली हमारा ट्रेड रिस्क फ्री है, और अब हम इसमें हायर टारगेट्स के लिए वेट करेंगे. सो लेट्स वेट फॉर द 1:2 and 3, and I will share what happens next. So let's watch the market. So guys, I would like to show you here how it went up. So it went up with this candle. We have got 1:3. So I exited my full quantity just here. So what was the strategy? 50% profit we booked at 1:1, and in the remaining 50% we booked 1:3, and now we are completely out of this trade. So total, I'll show you the calculation how we do it as professional traders. So I did the calculation here. Total I traded is 20 lots, which is 500 quantity. My initial risk was 30 points, which is 15,000 risk. Remain 50% I booked at 1:1, 30 points, so 7,500. Then I did the TSL. Remaining 50% I booked at 1:3, so made 22,500. Total I made 30,000 profit on a risk of 15,000 rupees. And I initiated this trade at 9:32, and right now it's 10:06. You can see 10 बज के 5 मिनट, 10 बज के 6 मिनट हो रहा है अभी. 10:05 पे I got an out. So in 35 minutes I completed this trade. I hope you learned a lot, taken notes. How did you find this? If you have any questions, do comment below. I'll catch you in the next session with you. Thanks.